एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि ASN भी हम लोगों ने एक्चुअली हिंदी में रिलीज़ करने की कोशिश की मगर फॉर सम रीजंस वी कुडंट रिलीज इन थिएटर्स एंड फाइनली 777 Charlie is releasing in theaters and not that every film has to be a pan India film, but for 777 Charlie we have a very strong reason why we should be releasing this film in the north as well, because we find that even in the north there are dog lovers and this is a market we are trying to tap. We have given like 167 days of shoot and 3 years of commitment for this film. Director साहब ने तो 5 साल की commitment दिया है and there's a lot of passion and dedication which has gone behind the making of the film. तो इतना साल के बाद when you have given so much to the film, we thought कल जाके हम लोग 777 Charlie, I think the same team we can't recreate it. It's that difficult to shoot with a dog and to do what we have done in 777 Charlie. So which is why we thought releasing this film is the best thing to do and reach the wider audience. आपने एक साल पहले गाना भी रिलीज किया जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और उसके बाद फिल्म आप रिलीज कर रहे हैं तो एक प्रोडक्शन वर्क किस तरह का था, एक कितनी डिफिकल्टीज या क्या क्या चीज़ें फेस की आपने, अच्छी बुरी दोनों? In the sense to make this film? Yeah. Preparation तो मतलब compared to all my films, I think the experience what I've had in this film is completely different because as I said shooting with Charlie is not easy. Screen में देखने के time पे I think you enjoy the emotions and you laugh at the humor and all, but shooting करने के time पे it is as difficult as that. संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब you were shortlisted among many other female actresses, so how was the experience shooting for the film? Especially with Charlie. Yes, एक तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि इस मूवी में मुझे करना ही है. जब मैंने एक पोस्टर देखा था जहाँ पे लिखा था लुकिंग फॉर द फीमेल लीड, पर जब मुझे पता चला कि डॉग के साथ मेरा इंटरेक्शन भी होगा, मुझे लगा बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत फ़न होने वाला है. इंडीड बहुत मुश्किल था बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना कि जब डॉग को परफॉर्म करना पड़ता है, उसको नहीं पता उसे एक्टिंग करना है, तो उसे करवाया जाता है लुकिंग, उसको फूड का ड्राइव देखे, फूड दिखा के. तो हम लोग को ऐसा करना पड़ता था अक्सर कि फूड को हमें अपने मुंह में रखना पड़ता था ताकि वो हमारे आंखों में दिखे. और ऐसा बहुत बार हुआ है कि पीछे प्रमोटर जो उनकी ट्रेनर है तो वो पीछे से कमांड दे रहे और हमें अपना डायलॉग बोलना पड़ता हो, तो हम लोग को मल्टीपल टास्क करना पड़ता था. एक तो उसे परफॉर्म भी करवाना है, वहाँ से वो भी कमांड दे रहे उसको इग्नोर करना है, तो बहुत सारे टास्क एक साथ करना पड़ता था. बहुत पेशेंस चाहिए था हमें. तो थ्रू आउट द फिल्म सब लोग को पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत थी. Okay, and Rakshit ji, you have dubbed for this film, so why not we have taken a dubbing artist and why you have not? मैं मतलब थोड़ी बहुत हिंदी बात कर सकता हूँ. तो एंड हमारे जो डबिंग कोऑर्डिनेटर है संजय जी, आई थिंक ही पुश्ड मी. मैं ASN में भी एक्चुअली डब किया था तो एंड वहाँ पे तो ज़्यादा डायलॉग्स था. सो ही वॉज वेरी श्योर दैट आई शुड बी डबिंग फॉर दिस फिल्म एंड इसमें थोड़ा डायलॉग्स कम है, इमोशंस ज़्यादा है. सो या टू प्रोजेक्ट द राइट इमोशंस द राइट वे, आई थिंक ओनली द आर्टिस्ट कैन डू इट. आई मीन और एक डबिंग आर्टिस्ट आके even when they try to give that voice, the emotions don't come very naturally. So I thought. Rakshit ji, would you want to release more of your film in Hindi? As I said, not every film has to be pan India, right? There are few films which probably when you see there is a market, then you should tap it. Rakshit ji, tell us about Rakshit Shetty and other actors, Raj B Shetty. They are all like good actors. Tell us about that. What is that? So Danny has played a very he comes in one scene as a guest role, and he plays a reporter. I mean, when you watch the film, you will get to know. Raj B Shetty is a dear friend, and when the director asked him to play the role, he was not very sure then. But then probably he wanted to be a part of a good film. He knew because he was involved in the dialogue writing of the film in the Kannada version. So he knew the script. Rakshit sir, Mumbai Swaroop Khan. Hi.
what has actually influenced you to make this movie? Human और जो होता है animal, दोनों के emotion को आपने बयां करने की कोशिश की है basically. तो ऐसी क्या बात है जो आपको influence की और आज के दौर में ये फिल्म लोगों के सामने पेश करें? So I think the one thing which I loved the most when I read the script was that I mean हम लोगों ने बहुत सारा डॉग फिल्म्स देखा है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मेनी डॉग फिल्म्स, ऑल्दो इंडिया में कभी मतलब रिसेंट पास्ट में कभी आया नहीं है, मगर वर्ल्ड वाइड तो हम लोगों ने बहुत डॉग फिल्म्स देखा है. एंड बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट 777 चार्ली इज दैट द इंटरनल जर्नी ऑफ वेरी इंट्रोवर्ट कैरेक्टर कॉल्ड धर्मा, हु इज़ अ कंप्लीट लोनर, जिसका जो अपने नेबर से भी बात नहीं करता, जिसका फैमिली नहीं है, and he doesn't have friends, no colleagues talk to him, that kind of a loner. When a dog comes into his life, how his life changes, what are the internal changes which happens inside him, and also the journey, Charlie और उसका journey जो है, especially in the second half, they go on a travel on a travel from Mysore to Kashmir. And in that travel, the kind of experiences what he has, which he has never had before, I think both the external and the internal journey of Dharma is what I found very interesting. And by the end of the climax, in the sense, see, this film is very much inspired from if you have read the last chapter of the Mahabharata, where the Pandavas leave to the heaven after the Kurukshetra war and all that. One by one among the Pandavas they die, but the Yudhishthira and the dog, Yudhishthira reaches the gate of the heaven, but there is one dog which has come with him, and that is the crux of this film as well. वहाँ पे मगर Yudhishthira takes the dog, but here the dog takes Dharma, and by the end of the film there is a very surreal environment which is created visually and in terms of audio and the way it is designed, that it's an experience which probably you wouldn't have had in any other film. Rakshit Shetty, the promotion strategy is very unique. कई सारी जगह प्रीमियर्स आपने रखे हैं, वहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एडॉप्शन ड्राइव डॉग्स के वो उस तरह का अलग तरह का मूवमेंट जो काफ़ी सराहा जा रहा है, वो सेव होता है. In the sense, if you watch the film, by the end of the film you'll know that मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप डॉग लवर्स हैं तो आपको फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, और आप अगर डॉग लवर नहीं हैं तो by the end of the film you will become a dog lover, and probably you'd want to adopt a dog. So film में end में the message is also that, and I'm sure it will move a lot of people who watch the film, and the dog adoption campaigns what we are driving right now is also in align with the film. आप दोनों ने डॉग के साथ काम किए कि आप लोग के लिए बहुत टफ था, बट आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ काम करके आप लोगों को कैसा लगा? मतलब चार्ली के साथ काम करके इतना डिफिकल्ट था ना कि बाकी कोई इंसान के साथ एक्टिंग करना बहुत इजी हो जाता है. एंड संगीता एंड मी वी हैड फ्यू वेरी कॉमेडी काइंड ऑफ सीक्वेंस थ्रू आउट द फिल्म. Even if it is a serious sequence, she is to make me laugh, and Charlie तो हमेशा बहुत लेती है, and she is to make me take a lot of takes as well. Sir, आने वाले हफ्ते में one of the most anticipated film आने जा रही है 777 Charlie. 40% जो है आपको बता दो इंटरेस्ट अभी जा रही है on IMDb. So इस तरह की फिल्म आज के दौर में आना और इस तरह का रिस्पॉन्स हासिल करना, you as a filmmaker, आपको कितना अलग? I feel really proud, obviously, because especially when you have given so much to the film, and when that film when it is getting even before the release, अगर response इतना अच्छी हो, then obviously खुशी की बात है. हीरो सर आप हैं या फिर चार्ली है? डेफिनेटली चार्ली है. हीरो हीरोइन सब चार्ली. फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि इतने बड़े बड़े कटआउट्स चार्ली के लगे हैं. That is our dedication to her. I mean, I think for her it doesn't matter at all. All that matters is she's only asking for food treat.
But yeah, it's our self satisfaction that we have worked with her for 3 years and we wanted to do something. So tell us about the director Kiran Raj. So Kiran Raj has been working with me, for last 8 years, including 777 Charlie. Before that, we have worked for 4 years together. He's been assistant director for Ricky and associate director for Kirik Party, one of the 7 odds, the writing team in Kirik Party. And after that, I think after the Kirik Party success, that's when he came and told me the story. And I immediately knew that I'm going to produce this film because he is one of the most passionate and dedicated filmmaker or associate director I've worked with. So I know that when as an associate director he is so passionate and dedicated. When he makes his own film, I was very sure that he's going to give his complete his 100%. So that's what I look at. When I get a script, I see if the technical crew is good and the director is good. And if the script is good, I believe that the film is going to come out very nice. As you have seen already accomplished. Definitely हर एक फिल्म नहीं. I think मैं मतलब एक बार फिल्म रेडी होने के बाद देखना चाहूँगा कि कैसा आया है फिल्म. And if I think that okay इस फिल्म को नॉर्थ ऑडियंस पसंद करेगी और there is a market for this film, then probably that's when I would like to give it a try. सर पिछले कुछ महीनों से जिस हिसाब से आपने देखा है कन्नड़ा सिनेमा जिस हिसाब से बूम हुआ है, लोग क्रेज जो है इस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. क्या कहेंगे जिस हिसाब से जो बदलाव आया है? हाल ही में अभी केजीएफ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, आपकी फिल्म आ रही है, इसके बाद विक्रांत रोना, मतलब लंबी कतारें लगती जा रही हैं. सो अब लोग ना सिर्फ कन्नड़ा सिनेमा, ना तेलुगु सिनेमा, ना हिंदी सिनेमा, इंडियन सिनेमा पर्सपेक्टिव करेक्ट. सो अब इस नए चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन? I mean, see, I think the whole world is going global now. हम लोग यहाँ पे बैठ के स्क्विड गेम देख रहे हैं जो हमारे लैंग्वेज में नहीं है मगर सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं. आई थिंक आगे जाके पूरे हर एक कंटेंट मोस्टली हर एक लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज में डब होके आएगी क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर एनी एंटरटेनमेंट industry. So everybody would want to come here and tap this market. So and I think even when we are making a film, it doesn't matter from which industry we are making the film from. Ultimately, it's an Indian film, and the world is your market now. So if you have a good content, then probably you should aim for the world. So audience who watches the film, what messages do you want to give to the audience? See, as I said, you would have watched a lot of dog films, but I can promise you that 777 Charlie is a very different film, and the kind of experience what you will have watching this film, by the end of it, as I said, it takes you to a very surreal world, and the visuals and audio is in a complete different level, and probably it's like Dharmaraj going to heaven. So you'll have that experience, a very heavenly experience, a very divine experience. So don't miss it in theaters. Please watch it in theaters because the experience what you'll have in theater is very different from a smaller screen. सर रिचर्ड एंथोनी भी इसके अलावा आपकी फिल्म आ रही है, उसके बारे में थोड़ा अगर बता सकें और लास्टली फैंस को क्या कहेंगे, कन्नड़ा ऑडियंस को, बाकी ऑडियंस को? अदर ऑडियंस को तो बोल दिया मैंने. हाँ, so Richard Anthony, it's going to be a prequel and a sequel of my first directorial called Ulidor Kannante. After 8 or 9 years, I am revisiting that storyline and doing something very different from what I've done before. So Ulidor Kannante was basically about 20 different perspectives about 5 characters, which is leading to one incident. Whereas this film is about one character and where does his life starts from? That's from a remand home to where I stopped in Ulidor Kannante, and there are 2 timelines basically. So one timeline is from his childhood to the incident of Ulidor Kannante, and the second timeline is from the incident of Ulidor Kannante to the climax where it goes and reaches next. So and both the stories intersect with each other, and they travel like that. It's a very very unique kind of a screenplay. Probably you wouldn't have watched anywhere else, not in Indian cinema or not outside also, I think. Sangitha ji, what do you have to say
Would you like to work in Hindi films more or in some films? As even Rakshit sir says that कंटेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा लैंग्वेज में कर रहे हो, तो मेरे लिए इट्स द सेम. अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो वो हिंदी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कुछ भी चलेगा. मेरे को स्क्रिप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मेरे को दोनों इंडस्ट्री पसंद है ऐसे देखा जाए तो. एंड लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे अबाउट 777 चार्ली ना, तो 777 चार्ली एक ऐसा फिल्म है जहाँ पे आप एनिमल बॉन्ड विथ ह्यूमन एकदम अच्छे से एस्टैब्लिश होते हुए देखोगे. और अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रे डॉग, एक कुत्ता जिसको आप ऐसे नॉर्मली इग्नोर करते हो, अपने लाइफ में क्या क्या फेस करता है और एक इंसान को कैसे बदल सकता है, चाहे वो जितना भी इंट्रोवर्ट हो, चाहे पूरी दुनिया से बात ना करता हो, लेकिन एक कुत्ता उसके लाइफ में एक ऐसा इम्पैक्ट ला सकता है कि वो उसका पूरा लाइफ चेंज कर सकता है. यहाँ पे आप देखोगे कि एक इंसान उसके लिए मैसूर से लेके कश्मीर तक जाता है और इट्स अ जर्नी. और इस जर्नी को आपको थिएटर में देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस. ये बस एक मूवी नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर ऑल. सर लास्ट में कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक फिल्म आई थी थाले हम, जिसका रीमेक बना था तेरी मरकानियाँ हिंदी में. अब चार्ली भी आ रहा है, तो अब पुरानी जो फिल्में हैं उसको भी लोग रेफरेंस के तौर पर देख रहे हैं और कन्नड़ा इंडस्ट्री को काफ़ी लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से कन्नड़ा इंडस्ट्री से ही इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? मतलब आई थिंक कन्नड़ा इंडस्ट्री से अच्छे फिल्म्स बहुत टाइम से आ रहे हैं. बगर और एज यू सेड ताले भाग्या वाज व्हाट इन 80s और 90s एंड तभी भी रीमेक हुआ है बहुत फिल्म्स. बट आजकल ज़्यादा फिल्म्स रीमेक होने लगा है. एंड आई थिंक मेनली बिकॉज ऑफ द न्यू जनरेशन फिल्म मेकर्स हु हैव कम इन द Kannada film industry. I believe there's more to come. I mean, we have just started now. Another 5 years down the line, probably we'll watch at least 15 to 20 more films like this coming.